A very warm welcome to all the teachers in today's spotlight session जो कि है वैल्यू बेस्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग आउटसाइड द क्लासरूम। तो आज हम बात करेंगे वैल्यू बेस्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में आउटसाइड द क्लासरूम। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं गुरुशाला के बारे में। गुरुशाला इज एन इनिशिएटिव ऑफ इंडस स्टार लिमिटेड एंड वोडाफोन आइडिया फाउंडेशन। कंटेंट पार्टनर इज जिज्ञासा एंड इम्प्लीमेंटेड बाय प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी टीचर्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका कोई भी क्वेश्चन है या आप कोई आंसर शेयर करना चाहते हैं या कोई सजेशन है आपके या आपके कोई भी आइडियाज हैं वो आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे साथ आपके सजेशंस और आइडियाज शेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जैसे कि आप यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द टुडेज सेशन हम आपके साथ एक अटेंडेंस फॉर्म शेयर करेंगे। तो सभी टीचर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो फॉर्म को फिल करें और अपनी अटेंडेंस को मार्क करें, जिसके बाद फॉर्म फिल करने के बाद आपके पास पार्टिसिपेशन ऑफ सर्टिफिकेट आपके मेल पर प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम हमारे स्पीकर जो हैं उन्हें इनवाइट करेंगे और उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमें ज्वाइन करें और अपने आइडियाज को हमारे साथ शेयर करें। फर्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगी जेरीना बेपी जी। सेकंड में इनवाइट करना चाहूंगी दलिमित इंक्ति पी जी को। थर्ड में इनवाइट करना चाहूंगी जुनमानी बरथापुर जी। जी आगे बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर मैम, और आज के हम अपने सेशन में अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। तो जी मैम, आप सभी से जानना चाहूंगी कि वैल्यू बेस्ड लर्निंग एजुकेशन के बारे में आपकी क्या राय है, आपकी क्या ओपिनियंस है, वो आप हमारे टीचर्स के साथ यहाँ पर शेयर करें। जी मैं रिक्वेस्ट करूंगी जेरीना बेपी जी वो हमारे साथ जुड़े और अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करें, अपने आइडियाज शेयर करें। जी थैंक यू मैम। जी हमारा क्वेश्चन था, क्या था, व्हाट इज वैल्यू बेस्ड लर्निंग वैल्यू एजुकेशन? बेस्ड एजुकेशन। यस यस। तो पहले हम जानते हैं कि हाँ वैल्यू क्या है। वैल्यू, हाँ वैल्यू इज इट इज ए मोरल। जब हम बच्चे हैं ना, पैदाइश में वो क्या था, उसका मॉरल बिहेवियर कैसा होगा क्या नहीं होगा, वो पहले हम उससे जानना चाहेंगे, क्योंकि और वो वैल्यू मॉरल वो पहले अपने घर से ही हम सीखना पड़ेगा। उसके बाद जब बच्चे थोड़ा बड़े होंगे, उसके बाद जब स्कूल जाएंगे, स्कूल जाने के बाद वहां पर ही वैल्यू और वो क्या था, स्पेशली मोर रोल होगा यहाँ पर अपने माता पिता, मतलब कि फादर एंड मदर, और एनवायरनमेंट, घर का जो एनवायरनमेंट होता है वही पर बच्चे को देखते हैं कि उसका मोरल वैल्यू क्या होगा। और वो क्या था, जैसे कि अब घर के अंदर में, घर के बीच में अगर सही एनवायरनमेंट नहीं होने से, तो वहां पर अगर कोई वैसे होने से, तो वो ही सीखेंगे, घर में जो दिखाई देगा वही बच्चे सीखेंगे। इसलिए हमें यही ध्यान रखना है कि वैल्यू हमें जब बच्चे पैदाइश में, ताकि अच्छी चीज उन लोगों को दिखा सके, बस वही है। और उसके बाद वैल्यू दैट आर इम्पोर्टेंट टू पीपल टेंड टू अफेक्ट ऑफ द टाइप ऑफ डिसीजन दैट मेक हाउ दे आर एक्चुअल बिहेवियर। यही है कि हम पहले उससे उसका डिसीजन, उसका थॉट, उसके जानने के लिए हमें घर में पहले से ही वो सब कुछ दिखाना पड़ेगा। उसके बाद जब एजुकेशन, जब 1 to 3 years तो वो घर में ही रहेंगे, आफ्टर 3 years जब वो स्कूल जाएंगे, तब उसका मॉरल वैल्यू वो क्या होगा, उसका बिहेवियर क्या होगा, सिर्फ शिक्षक जस्ट उन लोगों को जस्ट दिखेंगे कि जब स्कूल जाएंगे तो उसका डेवलपमेंट, उसका मेंटली डेवलपमेंट, उसका इमोशनल डेवलपमेंट, वो सब अपने स्कूल में जाके वो लोग सीखेंगे।
मेरा पॉइंट का वही है। और वो क्या था, सोसाइटी में कैसे बात करना है, कैसे बिहेव करना है, बड़ों से कैसे बात करना है, क्या बात नहीं करना है। मेरा राय बस इतना ही है। थैंक यू। जी। इसके बाद मैं जानना चाहूँगी हमारे जो बाकी टीचर्स हमारे साथ जुड़े हैं, दलिमित इंगतिपी जी और जुनमानी बरठाकुर जी, उनके क्या ओपिनियन हैं? Yeah, तो वो अभी शेयर करें। so, value-based education is a teaching approach towards the value. And then value-based education is like it is the like an art of training the students like to face the to make them learn to face the outer world with the right attitudes and then values. It is also the process of like overall round development of a students by making them learn through on hand activities, reflection. So here it includes all types of development, all round development, says like spiritual development, citizenship development, then comes your personality development, character development. So value-based education is like very much important for the individuals in their lifelong since like it gives the right directions to the students for shaping the future and will also add a purpose to their life. It will help them to understand the perspective of life in a better way, and it also will lead a successful life to become a successful citizen, and then it will help them to become more and more sensible, responsible. It will also develop a positive view of life in the student. So I think value-based learning education is very much essential for the holistic development of the students. Since in today's world, most of the parents you see like they wanted to give the best education to their children, like which is not only confined to the books, but that goes beyond to the book. So like the parents, they always sees that the children get the holistic development and they always focuses on some extracurricular activities and then value education along with that academic. And in the society where there is so much crisis of values, and I think this value based learning education proves out to be a solution. इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूँगी जुनमानी बरठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो अपने ओपिनियंस अगर शेयर करें। Am I visible to everyone? Hello. यस Good मैम। evening, everyone. Good evening, everyone. As we come to know what is the topic of today's discussion, that is the value-based experiential learning outside the classroom. So the headline of the discussion itself shows a lot. What is the meaning? So in this present day, we feel the scarcity of value. It is very much needed, actually. So the joining and the relationship between the value and the experiential learning is the focusing point of today's discussion. So, what is the experiential learning? Actually, in a simple way, if we want to say what is experiential learning, that is the learning by doing. That means the practical knowledge of the students, and it should be working with the values, because without value the knowledge of anything is meaningless. So in this modern world, value based education is so much needed to uplift our new generations as well as all the overall development of the students characteristics. So in our curriculum also the value based education is included, and therefore it refers to an approach to the teaching which works with values. And experiential education means we should engage our students in some activities which may help them in their future life, in their real life situation. They should not be limit themselves only in the bookish knowledge, because this is not enough to survive in this real life world. Therefore, we should focus on the experiential learning, because the title itself says that outside the classroom. That means only the bookish knowledge and teaching inside the classroom in the theoretical way is not enough to become a good citizen of a nation or to become a good human being. And for their livelihood purpose also, the experiential learning is very much essential. But whatever they learn, all that should be related to the value based. And what is the value? Value means it should help them to adjust themselves. It should be moral based, it should be value based, and it should be practical based knowledge. And I hope that is the real meaning of today's discussion topic. So that is the
beginning part, and that is the introduction of today's topic from my side. Thank you. थैंक यू। जैसे कि हमने बात किया वैल्यू बेस्ड लर्निंग क्यों ज़रूरी होनी चाहिए, बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट में ये कितना ज़रूरी है और किस तरीके से स्कूल में बच्चे वैल्यू सीखते हैं, उसके बारे में अभी हमने बात किया। तो आगे बढ़ते हैं और जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उस पे मैं चाहूँगी कि जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं वो अपने एक्सपीरियंस और उनके आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करें। तो सेकंड जो क्वेश्चन है, व्हाट आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ वैल्यू बेस्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग? मूल्य आधारित अनुभवात्मक अधिगम के कुछ उदाहरण क्या हैं? जैसे कि हम अपनी क्लासेस में देखते हैं या बच्चों के साथ जब हम काम कर रहे होते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हम देखते हैं। क्या हमारे एग्जांपल्स हैं? जी। दिल्ली अच्छा, में मैं पहले बोलूं? एक्टिविटी। जी, जी Okay, मैम, thank जी। you, ma'am. Okay, experiential. So before giving some of the examples of like value-based experiential learning, so experiential learning itself is the process of the learning using a via hand activities and then through reflection. So through via hand activities and then reflections, I think the students will assimilate a new experience with the previous ones. And it has been repeatedly shown that the learning process of the student has improved a lot through experiential learning. So some of the examples of value-based experiential learning can be like taking them for a field trip or making them visit to a museum or like a cultural institution. And apart from that, also like some hand-on activities, we can do cooking together with the students or making some art with the students together. And then while teaching them inside a class about the process of photosynthesis, we can take the students to the garden and show them about planting some plants and all. And then another example I can give is that while teaching about the animals in the lower class section, when we teach them about the classification of animal, we can divide the students into a group and we can let the students to put the marks of the animal. We can teach them through that way in the play role activity and then present themselves about the features of the animals, the habitat and all. So this will make the teaching learning more interesting. This is also one type of an experience learning, and another being a teacher, like conducting a test, and the students they're bound to attempt it. And when they attempt it, they find themselves that I have wrote the exam very wellly, but the outcomes of the result what they were expecting was not satisfied. So like out of 30, they got 25. So they might be thinking like, where have I done some mistakes? My exam was so good. Why I couldn't get my full mark? What the outcome of my result was so less? So next time, what they will do? They will try to improve it. They after knowing that I have done a mistake in spelling, and also next time they will focus more on their spelling. And next time they will try to attempt the best way they can. This is also one type of experiential learning. थैंक यू मैम। जेरीना बीपी जी हमारे साथ शेयर करना चाह रही थी। जी मैम। हुँ। जी, मतलब कि मेरे हिसाब से जो ये एक्सपेरिमेंटल एग्ज़ाम्पल है वो एक था एक इंटर्नशिप का। एक इंटर्नशिप जो होता है ना, जैसे कि कोई भी हो, एक एमबीबीएस एक कंप्लीट हो गया तो कंप्लीट होने के बाद फिर इंटर्नशिप के लिए उन लोगों को भेज दिया जाता है। तो थ्योरी उन लोगों को जब पढ़ाई करते हैं उस टाइम पे वो लोग थ्योरी तो मिलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब इंटर्नशिप में जाते हैं तब भी वो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो एक चीज़ तो ये है कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग बेसिस वो थोड़ा लेट होता है, लेकिन जब करेंगे वो लाइफ लॉन्ग कभी भी वो नहीं भूल सकते हैं। माना कि वो लोग थोड़ा जब चाहिए उस टाइम थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन जब
वो लोग लेकिन आइडेंटिफाइड कर सकेंगे कि हाँ ये इसका चीज तो यही है कि एक उन लोगों को एक बच्चे को दिखाएंगे कि हाँ एलिफेंट क्या है। एक एलिफेंट तो वैसे तो बोल रहे हैं कि उसका पिक्चर भी दिखाया कि यही है इलेफेंट 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 तो एक काला होता है, बड़ा होता है, ये तो हम लोग बोलते रहेंगे। लेकिन उन लोगों को क्या होता है कि एक्सपीरियंसली उन लोगों को दिखाना पड़ता है कि हाँ यही है इलेफेंट। उनका उन लोगों के लिए कहीं जू में ले जाकर उनको दिखाएंगे कि हाँ ये तो इलेफेंट है, क्योंकि डिफरेंसेस उन लोगों को दिखाने से जब दिखाएंगे तब तो उन लोगों को हाँ ये उस एक्सपीरियंस उनको रियलिटी एक्सपीरियंस जब मिलेगा तब मिलेगा। उसके बाद जब उन लोगों के पास जब मिलने के बाद वो लाइफ लॉन्ग होता है, वो कभी नहीं भूल सकते हैं। वो ही एक अच्छा होता है। और एक प्रैक्टिकली जो भी चीज उन लोगों को बोलेंगे कि हाँ थ्योरी में हम ये करेंगे, साइंस में भी हम लोग बोलते रहेंगे कि हाँ ये वो क्या था, जब दिवाली अभी रिसेंटली गया हुआ है तो पोल्यूशन के बारे में हम लोग बता रहे हैं कि यहाँ पोल्यूशन के शिक्षा दे रहे हैं। वहां पर चैप्टर वो कंप्लीट हो गया था, पोल्यूशन ये है वो है, लेकिन वो लोग बच्चे इतना समझ में नहीं आएंगे। लेकिन उन लोगों को जब दिवाली है उन लोगों को पटाखा वो फोड़ने नहीं फुटाना है ये, अगर जब उन लोगों को दिखाएंगे को हाँ पोल्यूशन एयर पोल्यूशन वो देखने के बाद वो प्रैक्टिकली कर लिए तो वो लोग वो एक्सपीरियंस भी कर लिया तो वो मान भी लेंगे कि हाँ ये एयर पोल्यूशन का मतलब यही है, तो वो अच्छे से वो समझ लेंगे। और एक से है वो मैम ने भी बोल दिया कि हाँ फील्ड ट्रिप, फील्ड एक्सरसाइज में उन लोगों को काफी ज्यादा ले जाना पड़ेगा, तब भी ज्यादा दूर नहीं होने से तो आसपास अभी एनईपी का तो आ गया है, उनमें से ही ये लोकेलिटी कहीं पर भी हो उन लोगों से लेने से कुछ दिखाने से जो भी हो जो समझाना चाहते हैं वो अगर एग्जाम्पल बेसिस दिखाने से वो लोग काफी मदद होगा। और बस मेरा आइडिया इतना ही है। थैंक यू। जी, जुनमानी मैम आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? Yes, yes. The second question of our today's session is that some examples of experiential learning. So as I already told that experiential learning means learning by doing. So it completely relatable with the practical knowledge. So if I take an example of learning a bicycle or learning how to drive a car, when we give the knowledge in the theoretical way to the student, suppose you have to switch on like this, you have to go like this, but it will be not work so much. But when we take the student to the real field and we ask them to learn how to on, how to drive, them they will learn in a better way, and it will be like a unforgettable experience for them for the lifelong, that will never be forgotten by them. And one more example we can take, that suppose if we teach the students about some animals, about some uh, that means parts of a thing, but it is better to show them in the spot that you see this is the part and that is the name of this part, then it will be more easy for the students to understand and to remember them for their lifetime. So yes, it is really very helpful. The experiential learning is far better than the theoretical knowledge, I think. So for second question, I think this is enough from my side, because already the two speakers have told all the things that similar to this topic. Thank you. जी, थैंक यू टीचर्स। जैसे अभी हमने बात की कि क्या-क्या एग्ज़ाम्पल्स हैं और किस तरीके से बच्चे आजकल लाइफ़ लॉन्ग अगर चीज़ें याद रखनी है, तो कैसे प्रैक्टिकली ज़्यादा याद रख पाते हैं। तो हमारे साथ जो टीचर्स जुड़े हैं, उन सभी से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो भी अपने सजेशंस, अपने आइडियाज़, अपने आंसर्स को हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। जी, तो आगे बढ़ते हैं टीचर्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ वैल्यू बेस्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये हमारे लास्ट क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है। तो इस पे मैं चाहूंगी जुनमानी बरथाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो अपने सजेशंस और एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। जी जुनमानी जी।
So the third question for I today's think, session is, am I जी. audible or visible? Yes, ma'am. You can continue. Yes, yes, yes. So if we see that it is already resulted and research that experiential learning contributes a lot to students' engagement in different activities, and it makes the learning process very interesting for the students. So if we do not create an interesting environment and interesting situation in the learning process, the students of today's world will be not attracted towards that process. So what are the outcomes or of this value based experiential learning? Is the number one point is it makes the learning relatable to the students. That means they can build whatever they learned in the theoretical knowledge, they can apply in the real world situation. For example, as I already told, if they learn about how to ride a bicycle in the book, then they can experience this in their real life situation. And then they can improve their critical thinking capacity. That means how to do this thing. They will think themselves. And according to that, they will also acquire the knowledge of problem solving as well as decision making. These are really very helpful skill for that means a person in our life. Therefore, they will learn these things also from this experiential learning process. And then the students also get the chance to link the all theoretical knowledges in their practical world, and the engagement of students can be increased by this value based experiential learning, because it may attract them towards the learning process. For example, some subjects have already introduced in our course, in our curriculum. Suppose automotive, it's a very important subject now newly introduced in our system, in education system. Here the students will learn how to arrange the parts of a vehicle, how to repair. That means it will relatable to the course of mechanic. So in practical field they will learn how to arrange the parts, how to move them, how to repair them, and how to construct them again. So these things are really comes from the experiential learning itself. And then it can also provide a golden opportunity to the students to relate their that means whatever knowledge they gained already to the practical life. So it can also promote a teamwork. Teamwork is very much essential in such type of learning, because teamwork help to learn from each other among the peer groups. They can learn from their friends, they can learn from their classmates, because sometimes teacher is not enough to teach anything, because they can learn from their own friend circles, and this can happen only by creating the value based experiential learning, yeah, inside the classroom as well as outside the classroom. So that's all from my side. Thank you. जी. इसके अलावा मैं जानना चाहूँगी दाल मिट्टी इंतिपी जी से. Okay, जी ma'am. मैम. So, outcomes of the experiential learning, the result. So there is a very true saying that I hear, I forget. So whatever we teach them inside the classroom, they might forget it. So I see, I remember. So when we let them do the things, they will remember it for their whole lifetime. I do, I understand. So when we let them do practically to experiential learning, I think they will understand it for their whole lifetime. So experiential learning, it like contributes students engagement to a deeper understanding, and then improves the academic outcomes, and then enhanced the work and their life skills. Specifically, it can make their learning more relatable. Like the students see they build whatever they have learned, and then they are provided with an opportunity like to make a connections with a new experience with the existing one, and then it can also increase their effectiveness of learning. So when the students they are engaged in some critical thinking, they have some when they have the problem solving skill, they can engage in decision making also. And then as already ma'am has said that it can link theory into says practice. So students, what happened? They have also an opportunity to engage in the experience activities like by to practice what they have already learned and see the applications of the theoretical concept with practice and see the application process and then make it generalization.
And then it can also increase students engagement by this supporting collaboration and all. And then it can also help them in assist them in memory retentions by building up a strong relationships between like feeling and thinking. Like students, they have the capacity to learn it more successfully when the information is associated to them through value and then feeling. It will also help them to develop or leads them to develop their skills for their lifelong learning to by assisting or acquisitions of all those essential skills, and then encouraging the students to reflect and then conceptualize and then plan for the next step. That's it from my side, ma'am. Thank you. यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी मैम, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? ज़रीना बीपी जी मैम। यस मैम, यस मैम। मतलब कि मेरे हिसाब से जो एक्सपेरिमेंटल आउटकम, वैल्यू बेस्ड एक्सपेरिमेंटल आउटकम है, वो एक नंबर है मेरे हिसाब से वो एनसीसी। एनसीसी होता है, क्या होता है कि वैसे तो हम एनसीसी क्या होता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट, बच्चों को ऐसे थ्योरेटिकली तो हम लोग बोलते रहेंगे कि हाँ ये है एनसीसी, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट कैसे, लेकिन उन लोगों को प्रैक्टिकल अगर करने नहीं देंगे ना, तो वो कभी भी नहीं सीख पाएंगे कि हाँ ये लेफ्ट पहले आगे कौन सा पैर रखना है, कौन सा हाथ कौन सा पहले, ये सब पूरा प्रैक्टिकली पहले करना पड़ेगा। और उसके बाद उसका आउटकम जो आएगा, आउटकम तो वो पहले एनसीसी जब सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे, तो वो जब वैल्यू बेस्ड एक्टिविटी आउटकम आएगा, तो वो क्या होगा, बाद में वो एक डिफेंस भी वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसका मतलब कि कोई भी हो, मतलब कि वो जॉब के लिए वो कभी इतना दूसरा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अगर एनसीसी का, अगर जब बच्चे छोटा से अगर बड़े हो, जब उसका जॉब का क्वालिफाइड होगा, तो उसका सर्टिफिकेट से वो, उसका एक्सपीरियंस है, वो डिफेंस के लिए कोई उसका आउटकम आ जाएंगे उसका। और नेक्स्ट एक है वो, मतलब कि ज्यादा से ज्यादातर फुटबॉल भी एक एग्जाम्पल होता है, और एक कोई भी सिंगर या गायक, उन लोगों का भी स्केल कैसे ढूंढेंगे, उसका जब छोटे से उन लोगों का अगर एक्सपीरियंस रहेंगे, वो नहीं सीखेंगे, तो वो आगे जाके वो नहीं कोई भी हेलो वो कभी भी उसका लर्निंग आउटकम नहीं आएंगे। और 3 नंबर होता है ये सिंगर, और नेक्स्ट होता है वो कोई भी, जैसे कि हम यहाँ पर केजीबी भी, तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर कोई भी लड़का तो ऐसे नहीं है कि सब गर्ल्स का ही स्कूल होता है। तो उन लोगों को क्या अभी से हम क्या सिखाते हैं, जैसे कि कटिंग हो, एम्ब्रॉयडरी हो, वो सब सिखाते हैं हम। तो वो क्या होता है, एक वोकेशनल एजुकेशन के अंदर में आ गया है कि अभी क्लासिक से वो लोग सीखेंगे कि बाद में वो एक जॉब के लिए के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। और जब उसका ये सब पूरा अच्छे से सीखेंगे, तो उसका लर्निंग आउटकम अच्छे से आएंगे, ताकि कि जॉब के पीछे नहीं भाग के वो अपना खुद का दुकान या कोई भी अच्छा सिलाई दुकान खोलने से वो अपने लाइफ लॉन्ग क्या बोलूं नहीं आ रहा है, लेकिन उसके लिए वो अपनी इनकम सोर्स वो अपने खुद ढूंढ सकेंगे। यही है मेरा, इतना ही है। थैंक यू मैम। थैंक यू। जैसे मैम आप बता रहे हैं जेरीना बेपी जी, उसी तरीके से हमारे साथ गोपाल सूत्रधर जी जुड़े हैं, जिन्होंने हमारे साथ भी शेयर किया है कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन मीन्स द इंट्रोडक्शन विथ internal real human qualities in oneself which build a simple person to a extraordinary personality। तो थैंक यू सर आपके सजेशन शेयर करने के लिए। इस पर मैम अगर आप कुछ कहना चाहें। जुनमानी मैम, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? Yes, yes. Value-based experiential learning is a process actually, which can help a student for overall personality development as well. We are focusing on the practical knowledge as well as the livelihood. So
Along with that, we should also focus on this. That is very good point that presented by one of our audience. Thank you for that. So overall personality development of a student is really very important in this time, because without a good personality, a human being cannot, that means present or show his or her existence in this modern world. That is very important. So it should be given in the school education system itself, and it includes the character development, personality development, citizenship development, as well as the spiritual development too. All these things can be said as the value based experiential learning inside as well as outside the classroom. So really it's also very important. The personality development of the student is very, very important. Yes, thank you. थैंक यू मैम। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज एनईपी सेज अबाउट द वैल्यूज। मूल्यों के बारे में एनईपी क्या कहता है? तो इस पे मैं चाहूंगी कि दलिमित इंगतीपी जी अपने ओपिनियन शेयर करें यहाँ पे। जी मैम। Our Indian education systems were based on value-based educations, which consists of like the systems of Gurukul, and then we have the world famous Nalananda, Tashila's universities, and also. So value-based education policies reforms were based on utilizing the knowledge that are very much benefit for like humankind. So the value like see in our India, means like in ancient India we have some this knowledgeable personalities, like some of them like Aryabhata and all, some examples in front of the world. So the long-term impact, that is 10 plus 2, is shift to 5 plus 3 plus 3 plus 3 plus 4. And I think this decision will bring about major changes in the Indian educational system. So the NEP, that is the new National Education Policies, promote value-based education with all the inclusive of co-developed holistic educations, and then we have Bharat-centric educations, and then development of the knowledge-based society, emphasis of a knowledge-based education. So as Angela has said earlier, that see, education is the most powerful weapon through which we can change the whole world. And I think this word has really made a sense with the reforms of this NEP 2020, because importing this moral values in the reforms of NEP can build up a strong characters and values, where there is a crisis of this moral values in the society. And see, like establishing this relation between this national education policy and then value-based educations, I think it will be much easier due to this assignment of the objective. It will provide a value-based educations, like it will provide a value-based educations to inculcate a word like peace, and tend to aid a moral, spiritual, cultural, then values in the student's mind. And then it will also provide a value-based education, which is very much useful in developing the community into humanity approach. And along with a scientific view, with that of a pure intention, to of the growth of the country, and then the countries towards the betterment. And then it will also provide this value-based education, which is also very much useful in identifying the ethics related activities, like which is related to the implementation of educations of critical thinking. And then like to motivate ways in which educations implement a ways to which education will motivate to accept some of the social values, like we have team spirit, cooperation, and a sense of tolerance. So I think this NEP will help us to develop this knowledges, this skills and values that support responsible in
promoting this human rights, and then living being a global well-being, and then that will reflect a global citizenship. That is from my side, ma'am. Thank you. इसमें जुनमानी मैम आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? Yes, sure. Thank you for giving me this opportunity again. Among all the questions, this question attract me a lot because this is the most important question I think among all those, because as we all the teacher Yes. community know that new education policy is going to implement in our curriculum as well as in the whole education system. So it is really very important. So what does NEP say about the values of experiential learning? That is very important. So NEP focuses on imparting value-based education to our youth, especially the adolescent period. Not only for adolescent period, actually, the focus is from the primary section itself. And the value-based education can help the nation to fight against all kind of ill wills, violences, dishonesty, corruption, exploitation, and these things are really very focused in the new education policy system. So value-based education system is going to implement in all the categories and all the parts of the education system very soon. Already it is implemented in some, actually not NEP's new policy is not implemented yet, but already in our curriculum system we are doing all this, we are getting, but still the NEP is going to improve this much better than the earlier ones. And here I want to point out some important universal values which are actually or specially mentioned by NEP. And they are truth, peace, non-violence, love, and the righteous conduct. These are the very, very essential values that we should implement, or we should teach our students how to utilize these values in their real life situation. And again, I want to add here, according to new education policy, curriculum in schools have to develop some key qualities. And the qualities like regularity, punctuality, cleanliness, self-control, industriousness, sense of duty, desire to serve, responsibility. All these are very, very important, and NEP is going to focus on these things thoroughly. In varieties of subjects, they are going to distribute these values, and regarding the topic, they will include all these things. And again, here I would like to add, NEP again says that in the early childhood period, it is very, very important to inculcate some habits and some moral values to the young children, because itself they will learn from the early age and it will help them in their upcoming future life. So what are the focusing points in the early childhood days? That is also very important. And they are the good habits, disciplines, manners, care and concern for each other. That means among their friend circles, how to care each other. For example, they can share their tiffin. If one student has not brought tiffin, he or she may feel hungry at that time. The peer or the friend of that student may help him or her by giving her own. That is such an example I want to add here. And then being helpful, learn to share, all these are included there. And being friendly, doing own duty. These are very simple, simple things, but it should be included in our curriculum, not curriculum actually, this is outside the classroom activities, but this should be taught by the teacher to the students from their early age. And this is that the NEP is going to focus on this thing also. And again, NEP emphasize to provide the teaching methods, that means in a different way. That means new techniques of teaching, new methods of teaching should be adopted by the teacher. So how to inculcate the good habits in the students? That should be taught by the teacher. What is the process that may help the student to acquire such habits or such type of that means practical knowledge which may help them in their upcoming future. And for example, starting their day with a prayer at home, this can be helped by their parents, and how to show respect to their parents as well as the elder persons as well as teachers. These are basic things that we should provide to our children from their very early age. So NEP is focusing on all these things which are really value based, and these are really very helpful for the practical life as well as the real life situation. So thank you.
इसी के साथ मैं चाहूँगी कि ज़रीना मैम आपके अगर कुछ पॉइंट हो तो वो आप अभी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरा ज़्यादा से ज़्यादा नहीं है, सिर्फ़ एक ही है, वो है एक एनईपी में एक और एक चीज़ है, वो है लैंग्वेज। वो क्या था, अभी एनईपी जो अच्छा किया है, वो है मल्टी लैंग्वेज। पहले तो हम लोग सिर्फ़ एक ही लैंग्वेज में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम मल्टी लैंग्वेज और मदर टंग यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को जब बच्चे सीखने के लिए जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो वो क्या होता है, मदर टंग यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं है, वो नहीं सीख पाते हैं, वो अच्छे से नहीं सीख पाते हैं। लेकिन अभी ये जो मदर टंग इंक्लूड किया है, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हुआ है, क्योंकि अगर बच्चे जब सीखने के लिए जाते हैं, तो पहले अपना मदर टंग ही सीखते हैं। तो जब स्कूल में जाते हैं, तो थोड़ा अपने मदर टंग यूज़ करने से तो वो ज़्यादा से ज़्यादातर बच्चे महत्वपूर्ण होता है। बस यही है मेरा पॉइंट। थैंक यू। जी। इसी इसी के साथ हमारे साथ जो टीचर्स जुड़े हुए हैं, जैसे कि डॉक्टर त्रिलोक्या देका जी ने हमारे साथ शेयर किया, एनईपी इंक्लूड्स फिजिकल वैल्यू, मोरल वैल्यू, सोशल वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू थ्रू करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट सर। राइट, इसी के साथ बाकी राइट टीचर्स भी सर। हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस, अपने सजेशंस एनईपी के बारे में शेयर कर रहे हैं। जैसे कि गोमा जोशी जी यहाँ पे शेयर कर रहे हैं कि एनईपी फोकस मेनली ऑन वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, इट गिव्स स्टूडेंट्स क्लियर नॉलेज ऑफ एनी टॉपिक्स। तो बाकी सभी टीचर्स से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी, वो भी अपने सजेशंस, आइडियाज, आंसर्स हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तो जैसे अभी हमने बात किया कि एनईपी में कैसे एनईपी हेल्प करता है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन में, किस क्या बोल रहा है एनईपी बच्चों के पूरे ह्यूमनिस्टिक, इथेनिकल, ओरल एंड यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के बारे में बात करता है। तो ये सब अभी हमने डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एज अ टीचर, हाउ कैन वी मेक श्योर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इज हैपनिंग इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम? एक शिक्षक के रूप में हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि मूल्य आधारित शिक्षा कक्षा के अंदर और बाहर हो रही है? तो यहाँ पे मैं चाहूंगी अगेन हमारे जो स्पीकर्स हमारे साथ जुड़े हैं, अपने यहाँ पे एक्सपीरियंस, सजेशन शेयर करें अगेन। यहाँ पे मैं जानना चाहूंगी ज़रीना बेपी जी हमारे साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू मैम। पहले मैं यही यहाँ पर सजेस्ट करूँगी कि हाँ, हाउ में एक नंबर है टीचर का क्लासरूम में इंटरेस्ट। जब आप क्लास करने जाएंगे, तो वहाँ पर इंटरेस्ट कैसे आएगा, वो पहले इंटरेस्ट क्रिएट करना है। तो पहले टीचर को वो इंटरेस्ट कैसे लाएंगे, वो पहले, जैसे कि मैं एक चैप्टर पढ़ा रही हूँ कि पॉलिटिकल साइंस, जस्ट एग्जांपल। तो एग्जाम्पल में पॉलिटिकल साइंस के बारे में कुछ टॉपिक्स में बता रही हूँ, फंडामेंटल राइट्स ऐसा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है। अगर कोई भी बच्चे उनमें से अगर इंटरेस्ट होगा, तो उनमें से सवाल आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, तो हम पता चलेंगे कि हाँ, ये थोड़ा इंटरेस्ट है, वो ध्यान दे रहा है। तो पहले हमें इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा। तो बाहर में जब वो उसके लिए आउटसाइड जब आएंगे, तो वो एक पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में पढ़ा रही हो, तो उनमें से थोड़ा इंटरेस्ट है, तो पता चलेगा कि हाँ, ये बच्चा तो इंटरेस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो ह्यूमन फंडामेंटल राइट्स क्या है, वो सब सवाल करेंगे। तो उनमें से सवाल हम लोग सवाल का जवाब हम देते हुए उन लोगों को उससे पता चलेगा कि हाँ, ये पॉलिटिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट है। तो वो बाहर में जब आएंगे, तो कोई एक पॉलिटिशियन व ऐसे आ सकते हैं। और दूसरा एक पॉइंट है, वो है आर्ट एजुकेशन। आर्ट एजुकेशन सेकेंड पॉइंट है, आर्ट एजुकेशन। अगर हम बच्चों को क्लास में इनसाइड में अगर ड्राइंग करने देंगे, तो उन लोगों को क्या होगा, ड्राइंग कंपटीशन ऐसा वगैरह पूरा एक्टिविटीज कराएंगे। तो उस टाइम में हम लोग एक्टिविटीज करने इनसाइड में, तो वो पता चल जाएगा कि हाँ, कौन सही ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं वो। और बाहर में जब एग्जीबिशन होगा कि कोई हाँ एक्टिविटीज आउटसाइड, तो एग्जीबिशन में तब वो आर्ट
एजुकेशन में वे पार्टिसिपेट कर सकेंगे, क्योंकि वो इनसाइट में ऑलरेडी सीख लिया, इसलिए वो बाहर में भी वो अच्छे से वो अपना काम कर सकेंगे। और नेक्स्ट है वो भी साइंस एग्जीबिशन, साइंस के टॉपिक्स में भी हम लोग बताएंगे कि हाँ ये तो स्केलेटन है, ये है, वो साइंस एग्जीबिशन पूरा साइंस टॉपिक्स में जब साइंस क्लास करेंगे तब उसी टाइम में सब बताएंगे। तो वो आउटकम कहाँ आएंगे, वो जब एग्जीबिशन, साइंस एग्जीबिशन स्कूल में रखेंगे या बाहर में डिस्ट्रिक्ट लेवल हो या स्टेट लेवल हो, जब एग्जीबिशन रखेंगे तो वो बच्चा आउटकम में भी वो अपने दिखा सकते हैं कि हाँ इसके लिए ये रहा। और नेक्स्ट पॉइंट है वो रोड सेफ्टी। टीचर वो रोड सेफ्टी के लिए पहले स्कूल में ही सिखाएंगे कि हाँ रेड लाइट का मतलब क्या होता है, ग्रीन लाइट का मतलब क्या होता है, येलो लाइट का मतलब क्या होता है वो। और वो सीखने के बाद वो आउटकम जो बाहर आएंगे तो वो रोड क्रॉस करने के लिए भी वो पता चल जाएगा कि हाँ आउटकम पता चल जाएगा कि हाँ रेड लाइट का मतलब क्या है, ग्रीन लाइट का मतलब क्या है, येलो का मतलब क्या होता है। तो उसका आउटकम बाहर आ गया, तो वो रोड सेफ्टी क्लास में होने के साथ साथ हम उसका आउटकम भी बाहर हम एज ए टीचर हम वो भी मिल गया। तो यही है मेरा पॉइंट, सिर्फ चाहिए। थैंक यू जी। दालिमेत इंतिपी जी, मैम आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? Okay, thank you, ma'am. See, as a teacher, how can we make sure value-based education is happening inside and outside the classroom? Okay, so see, value education start from the home itself, and then it continues throughout the life. But in school, value education takes a major part in the individual's life, as I have already said, that it give a right directions to shape the future of the students, and then it can add purpose to their life. It will also help the students to learn to live the right way of life. The school is the place where most of the children, they have most of their learning times, and the behavior, the attributes that they have developed in their lifelong have deep have their root in the school. So I think imparting value education only through a textbook, only through a graded subject, or only through lectures that is given in the class is not enough. So the school should take a priority, and then it should give importance and inculcating some desirable values among the students. So, and for that, special, well-planned learning should be designed so that the students understand the importance of the values in the real sense, not just as a fact. So value based education, so it can be imparted to the students both through like curricular and co-curricular activities. So when we talk about the curricular activities, like value education will be imparted to the students inside a classroom. That is, the subject, the curriculum of the subject should be flexible enough so that we inculcate the teaching values. Say like, if I'm teaching inside a class, if I'm giving an example, so while giving the example, I can link the things with the real values in life. So it is like, for example, if I'm giving an example of everything, then I can say is that teaching doesn't have too much pros for. So this thing I can give. And then while teaching them about great writing and all, while giving them some grammar rules, we give like values should be given like on sacrifice, brotherhood. This will help the students to learn more about the concepts or the importance of life. And inside the classroom, yes, curricular activities students acquire knowledge, but I think the overall development of students is based on through co-curricular activities, which is conducted outside the normal classroom. So like through sport activities, students can focus on their physical, their mental health, and they can also learn some values like say decency should we have, determination. जी। आई थिंक मैम के साथ कुछ टेक्निकल इश्यू हुआ है, तो जुनवानी मैम हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगी इस पर उनके क्या विचार हैं? Yes, thank you. So, our question number 5 for today's session is that as a teacher, how can we make sure value-based education
is happening inside and outside the classroom. So here I want to categorize the inside as well as the outside This classroom. will not Inside the classroom it is different and outside the classroom it is different. So first of all, I want to say about the inside the classroom. To make it enable to create the value-based education inside the classroom, the teacher should be creative. We should be creative because we should attract our students so that they are interested to attend our classes, and we should provide the relevant materials like e-learnings and online resources, because these things attract the students to attend the class. They may not feel bored to attend the class of that particular teacher, so the teacher should be alert for these things. And again, the teacher should be stay up to date, because if we updated ourselves, then easily we can attract our students, because they are our students are from the new generation. They belong to the new generation. They learn many more new things than us, but we should update ourselves according to their needs and desires, according to their interests, because if we cannot fulfill their desires and their needs, then they may not feel any interesting things in the classroom. And then we should apply varieties of teaching methods. Suppose I am teaching the blackboard method today, then tomorrow I may use the projector or the smart board, so that the student may feel that yes, the teacher is using different kind of methods, so that I can attend the class, so that I can learn something new from the class. And again, audiovisual method is very interesting, as most of the schools have already got smart boards, as we have in our school. Sometimes we do use these boards, suppose rotation wise. Today we are using for one class and tomorrow for another class, so that all of the students can test the test of these smart classes. So it is a very interesting thing. And then teaching by practicing as a role model. The teacher should be a role model for the students, so that they can acquire the qualities. They can learn from the qualities and the personalities of the teachers. Therefore, the teacher should like a role model in front of the students. And then again, award and punishment. Punishment is not there in this new education system, so we cannot punish our students, but we should deal them in a loving way, in a friendly way. But award can be there, so we should award those students who perform very well and who can acquire the value based characteristics in themselves, so that they can get more encouragement to do more better, far better in upcoming days. And then now I want to say something about outside the classroom. So what should a teacher do outside the classroom? For example, as I already told you, in our schools recently added some new subjects to making our students more interesting. For example, I have seen two subjects in our practical life, that is automotive and tourism. Tourism is also a very interesting subject for students, but only teaching theoretical knowledge in tourism is not enough for students, so that the teacher can take the students away outside the classroom, like in the field trip, to visit the places which are historical, and so that they can realize the values of the heritage of our state, heritage of our country, so that it can add some practical knowledge as well to the students apart from their bookish knowledge. So NEP is also focusing all these things, adding some interesting subject for students, so that they can create themselves to make themselves perfect to exist in this modern world actually. So as a teacher, we should be alert always to make ourselves also up to date with the students, to make create the situation as well as the classroom environment, as well as sometimes we should arrange such type of outdoor activities also for the students, which can create this more effective of this system. So thank you. थैंक यू मैम। इसी के साथ मैम हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, डॉक्टर तेलोकिया देका जी पूछना चाह रहे हैं, इज जजमेंट अ वैल्यू? तो मैं आपसे चाहूंगी कि आप इसका आंसर करें। Actually, if we say in a simple way, judgment cannot be termed as a value, because judgment is just a thing. We cannot judge any person or anything without knowing from all the sides all these things. But sometimes
it may work like a value, but exactly it is not exactly a value, because for two students also we should not teach to judge something immediately, because judging something immediately is not a good thing actually. So if I say, then judgment cannot be termed as a value. जी, थैंक यू मैम। अभी हम अपने सेशन के अंत की तरफ बढ़ गए हैं और यहाँ पे मैं अपने गेस्ट स्पीकर्स और जो हमारे साथ टीचर्स जुड़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमें बताएँ कि अभी जैसे हमने बात किया यहाँ पे वैल्यू बेस्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग की, तो आगे इसी तरीके से जो हमारे सेशन हों, आपकी क्या राय है कि किस टॉपिक पे और किस समय पे ये सेशन होने चाहिए? कौन-सा टाइम आपके लिए सूटेबल रहेगा? तो उसके बारे में अगर आप बताएँ। और बाकी टीचर्स आप हमें आपके आंसर, सजेशंस कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। जी, जुनमानी मैम। Yes, I feel very good that I took participation in this session today, and I feel really lucky also, so that you have invited me as a guest teacher, and I got the opportunity to speak something on this very special topic. And the timing of the session is all right, because during the school time or during the duty time, it is not good, because all the teachers may not able to attend, because we have to maintain our daily schedule in our institutions. So according to me, the time is, it's okay. I think everyone can attend this meeting at this time, but others may have another opinions from their side. From my side, it's okay, and thank you so much for giving me this opportunity. इसके बाद मैं जानना चाहूँगी दालिमैत इंटिपीजी मैम के क्या ओपिनियन Okay, thank you सजेशंस हैं? for inviting us to these sessions where we got an opportunities to express our views relating to the topic like value-based education. And I think the timing is okay for me because in the during the morning and afternoon time, it's a busy schedule since we have to do classes and all. So I think the evening time is like okay for us. We are comfortable with it. जी, तो इसी के साथ सेशन के अंत की तरफ चलते हुए मैं सभी टीचर्स को बताना चाहूँगी कि आप सभी के साथ कमेंट सेक्शन में एक अटेंडेंस फॉर्म शेयर किया जा रहा है, उसको फिल करें, अपनी अटेंडेंस को मार्क करें, जिसके बाद आपको पार्टिसिपेशन ऑफ सर्टिफिकेट आपके मेल पर प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं और आप सभी को बताना चाहूँगी कि गुरुशाला के साथ जुड़े रहिए। गुरुशाला के जो सेशंस होते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स होती हैं, स्पॉटलाइट सेशंस होते हैं, संवाद सेशन होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, अ, स्किल अप सेशंस या बाकी सेशंस के साथ जुड़ने के लिए गुरुशाला पे बने रहें और आपके जो भी विचार हैं हमारे साथ समय-समय पे शेयर करते रहें। तो अगेन मैं कहना चाहूँगी कि आप सभी के साथ अटेंडेंस फॉर्म शेयर किया जा रहा है, प्लीज़ उसे फिल करें और आपकी अटेंडेंस जो है मार्क करें। साथ ही साथ आप सभी टीचर्स को बताना चाहूँगी कि गुरुशाला एप्लीकेशन भी हम अपने फ़ोन में ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, जिसका लिंक आप सभी के साथ कमेंट सेक्शन में शेयर किया जा रहा है। ईज़िली आप वन टच में एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसे यूज़ कर सकते हैं, तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ना भूलिएगा। थैंक यू ऑल द टीचर्स फॉर जॉइनिंग अस टुडे। Thank you. थैंक यू सो मच। Thank you so much.